आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है, हालांकि कोई डेट वो नहीं बता पाए। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? थोड़ा सा ये तो पहले भी पिछले 4 साल से 4.5 साल से हम यही सुन रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे, और वही स्टैंड जो गवर्नमेंट का था। हम पिछले 4.5 साल से यही सुन रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन, वी आर गोइंग टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि क्योंकि पंचायत का इलेक्शन करवाया हमने, पंचायत का इलेक्शन पूरे मुल्क में हुआ, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर में पंचायतें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था उसके तहत, अगर आप देखेंगे सेक्शन 15 वो कहती है देयर शैल बी एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एट द ग्रास रूट लेवल। सो वो पहले से था। हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री में पंचायत बाद में बनी, हमारे वहाँ पंचायत पहले बनी। तो ये कहना कि पंचायत के इलेक्शन हमने पहली बार करवाए वो भी गलत है। रिजर्वेशन के भी जो उन्होंने जो डाटा दिया है वो गलत है, और जो एम्प्लॉयमेंट पे डाटा दिया है वो सरासर गलत है। पर कैपिटा रिड्यूस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट एट एन अलार्मिंग राइज, बहुत बड़ी इस पिछले 4-5 साल में। और फिर कहना कि पत्थरबाजी ये वो दैट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, अब सुप्रेशन कैन नेवर बी ए सोल्यूशन, आई विल से। सो इफ़ यू सुप्रेस द प्रोटेस्ट इज़ अ डेमोक्रेटिक राइट। आप उसको सुप्रेस करेंगे तो उसके इट विल बी ए काउंटर प्रोडक्टिव। ये कभी फ़ायदामंद किसी भी इलाके के लिए नहीं होता। और प्रोटेस्ट कहीं भी होते हैं, पिछले दिनों जम्मू में प्रोटेस्ट हुए टोल प्लाज़ा को लेके, और पथराव भी हुआ, टीयर शेल भी चला, देन प्रिवेंटिव कस्टडी में भी लोगों को लिया गया। फिर जब वो प्रोटेस्ट जो थी वो असल में द शू वाज पिंचिंग समवेयर एल्स, तो प्रोटेस्ट जब वो मास प्रोटेस्ट बनना शुरू हो गए तो उन लोगों को इनको छोड़ना पड़ा। घरों में जाकर रात के 2 बजे बगैर बेल के उनके घरों में जाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर छोड़ना पड़ा। तो ये प्रोटेस्ट कोई मैं नहीं कहता कि भाई प्रोटेस्ट करना कोई एंटी नेशनल एक्ट है। बाकी रहा टेररिज्म का, कभी घटा भी कभी बढ़ा भी, वो अगर आप बॉर्डर्स को मैन करेंगे तो बॉर्डर पहले से ही मैन जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के पास पावर है। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ही शुरू में ही 1947 में ही जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो वो यूनियन गवर्नमेंट को पावर है पहले से ही, वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है नहीं। तो ये कहना कि नहीं जी सिक्योरिटी रीज़न से हम लोगों ने उसको यूनियन टेरिटरी रखा है, तो वो भी कोई मुझे लगता नहीं कि इट डिड कट मच ऑफ द आइस। चीफ जस्टिस ने क्या कहा जो ये सिचुएशन इम्प्रूव करने की दलील सॉलिसिटर जनरल ने दी? मुख्य न्यायाधीश का क्या कहना था? मुझे नहीं लगता है, देखो कमेंट तो मैं नहीं कर सकता कि वो क्या कहते हैं, लेकिन अपेरेंटली जो क्वेरीज उन्होंने पूछी थी और उससे कोई वो मुतमईन नहीं लगे मुझे। सी द गवर्नमेंट इज़ टेलिंग ऑल दिस फॉर लास्ट मोर देन 5.5 years. It is not a new thing. That is what I have said earlier also to you, that they'll come up with this response from the government. And the response is not new for us. We have been hearing it for last 4.5 years. But you can understand it, that it was not the case before the Supreme Court for election at all. It was questioning reorganization as well as abrogation of Article 370, which was before the Supreme Court. Election was, I just think that it was for some other purposes, that the Supreme Court has made it clear also in the court itself today. The Constitutional Bench has said that we are not going to be swayed by all these things, the road maps and the blatant lies which has been submitted before the court. But the court finally said, with the intervention of Mr. Kapil Sibal, the court said that we are not going to be swayed by all these things, and the matter will be decided on constitutional touchstone, whether it is ultra-virus or intra-virus, the constitution. So we expected this. It was not beyond our expectation. Whatever has been said by the government in the constitutional court before the constitutional bench, it was expected, and they are not fair. On one hand, they are saying that we are going to hold elections for the panchayat, and telling them that it is for the first time. Our panchayats were in place before rest of the country, and it was contained in the constitution of Jammu and Kashmir. So it is wrong to suggest that for the first time or for the second time we are going to hold the elections. So far as data of the unemployment and employment, all this is a fallacious data. Unemployment is on an alarming rise in Jammu and Kashmir.
if we will submit the data, but the court said that we are not going to be swayed by this. Mr. Kapil Sibal has raised this issue early in the morning, that we may be given chance to rebut all this. But the court said that we are not going to consider all this while dealing with the constitutional issue. So that is a good sign. So सामने